नमस्कार, मैं माया आप सबका स्वागत करती हूँ रिदम एडिशन 6 के इस फेस्टिवल में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये एक 45 दिन का ऑनलाइन फेस्टिवल है। उसके बाद इसका समापन ऑफलाइन रहेगा। दिल्ली में हम कला महोत्सव जो कर रहे हैं इसके माध्यम से। आज हमारे साथ हमारे दो अतिथि रहेंगे इस शो में, और इस शो की आज की जो शो है उसकी ये विशेषता है कि आप देखेंगे कि एक हम आर्ट्स की बात करते हैं, रंगमंच की बात करते हैं, कला की बात करते हैं, और दूसरा आर्ट को हम कैसे एक्सचेंज करते हैं, कैसे कल्चर को एक्सचेंज करते हैं, कैसे एक देश से दूसरे देश का रिश्ता इस कला के माध्यम से मजबूत होता है, भाषा के माध्यम से मजबूत होता है। तो आज हमारे जो दो गेस्ट हैं, तो मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक मेहमान, तो चलिए शुरू करते हैं। His Excellency Dr. Nawab Nasir Ali Khan, Honorary Consul of the Republic of Kazakhstan for the states of Telangana and Andhra Pradesh, was bestowed with the prestigious Jubilee Medal by the Republic of Kazakhstan in accordance with the presidential decree. Sir, we welcome you. I welcome you. Namaskar. On the behalf of Anjana Welfare Society and Amar Ujala, we are very glad to see you here. So today we will discuss about culture exchange program, because being an artist, I know this thing. This is a very important part, and when we exchange our culture, it's make relationships so beautiful. So because of this feeling, we get so many emotions, attachment. So yes, so let's talk about uh, Kazakhstan culture. What is the best point of there, and what is the we can say food culture and the art, music. So let's talk about that today. Thank you very much for inviting me. It's a pleasure and honor to be on your show. Am I clearly audible? Can you hear me? Yes, sir. It's perfectly fine for me. Okay, so we have a lot of common between Kazakhstan and India in terms of food and things like that. Like they eat very similar food like us. Like they eat pulao, which we call biryani, and they eat also a lot of kebabs, which is also common. This is all Central Asian and Turkish food, and Okay. samosa is also Central Asian. It's very interesting. It's from Iran and Central Asia, the samosa. And these are the things. And from Kazakhstan is a very big country. Actually, it's a very large country. It's the ninth largest country in the world, and we have very good relationship with India, economically and politically. Also, Kazakhstan exports uranium. 80% of uranium to India comes from Kazakhstan, and we export oil also, and we import from Kazakhstan, and we export pharmaceuticals and IT from India. There's a big gap. Actually, the import is about 2 billion, export is about 300 million. There's a gap. We're trying to bridge that gap, and we have good relationship. And see, now coming back to your subject, which is very interesting and a very important subject. Actually, recently I had a meeting with Vinay Prabhakar Shastra Buddhiji, who is the president of ICCR in Delhi. Very senior man, very important person. And we discussed about cultural exchange and also cultural diplomacy, food diplomacy. See, government has a diplomatic mission. We have an ambassador there, and they have an ambassador here. Government works on G2G, government to government, bilateral relationships, and that's one point. I We discuss is what is very important is cultural exchange. It's very important. See, it can see there are two things. One is government, one is people. So government to government, is bilateral and all that. But bringing people together is through cultural. So Yes. culture is very what you're doing is very important, and I think it's a need of the hour. If you want to build relationship with any country, with people to people, you need to have this cultural relationship. We've been doing a lot in Central Asia, especially in Kazakhstan. We have a embassy, and we also have Vivekananda Center. We have a lot of shows of art, music, culture, and also we have yoga sessions. But I think now it's time we do clothing also, Indian clothing, and that's what we discussed with the Shastra Buddhiji. Like we'll do clothing, food, and also art and music and things like that, which will also increase.
So we are in the process. Actually, we are working on it, and we are also planning to build a Gandhi museum in Kazakhstan in association with ICCR. That's also, so the museum will not only have the Gandhi museum will not just be a museum. It will be a very big infrastructure which will also have space for art, space for music, space for culture. We'll have a restaurant, we'll have a auditorium and all that, and people like you can come and perform and make us proud. So that's what it is. So coming back to diplomacy, diplomacy is not only just embassy and consulate. Diplomacy is a lot more than that. Cultural diplomacy, I think we can work on it together. When we are planning something, we'd like to invite you to visit Kazakhstan and plan a visit there and perform there. And we have a lot of Indians in Kazakhstan, especially we have a lot of students who are studying medicine in Kazakhstan, and some Are of they them. learning Indian arts too? G. Are they learning Indian arts too, Yes. students? Actually, interestingly, What do more you than Indians, the think of that? people who want to learn Indian art are local Kazakh people. They are very interested in learning Indian art. Okay. Time and again, we do a lot of programs, and there's a very good response. Actually, there are a lot of people. We have quiz programs, we have competitions. A lot of people from Kazakhstan come and take part, and they're very keen. And some of them want to come to India also and meet people like you and learn from you. So what we can do is we can plan. You can visit there and perform, and then invite them to come and learn from you. If they want a long term kind of an association, is it possible to do some online training? Is it possible? Yeah, it is. It is possible. I'm doing, and so many artists, those are associated with us, they are doing this online training, and it's a beautiful way to connect other people because it's not possible to come every time and they can come and they can learn and they have to stay. So many formalities parts. So because of this, there are so many students. They are not from India. They are learning from different countries, but they are doing well. And even nowadays, they're performing online too. This is a beautiful way to connect them. I know you are a very good artist. You are an excellent performer, and you are more into Sufi, which is very interesting to me. I also like Sufi music. So, can I know a little more about how you do, what you do, how you perform, so we can talk to our counterparts in That's why I Kazakhstan? wanted to know is there, see, in our Kathak, if I talk about Kathak, Kathak is basically based on stories. So yeah, so earlier we perform based on mythological characters होते हैं, like Rama, Krishna, based on that. And sometimes it's nowadays things are turning in a different way. So people are doing so many uh, experiments. And if you are talking about Sufi, to Sufi, it's just related the soul connection. The Sufi, I feel it just like bhajan, just when we try to worship and these kind of things. So based on Sufi things, Sufism, it's related with the music, different soul. When we feel soul is connected with the dance, with music. That's why I wanted to know, is there any pattern to learn Sufi music and Sufi dance or something? Because I believe this is something based on this Muslim culture. Yeah. See, Sufism is basically, very popular in Central Asia, and it's very popular in Turkey and that part of the world. So, because there are a lot of Muslim countries, but mostly this Middle Eastern countries are not Sufi, like Saudi Arabia and you and Gulf countries, but the Central Asian countries and Turkey and all that, they're Sufism, like whirling dervishes and all those things you must have heard. There's a lot of Sufism in this part of the world, and some of the Sufis have come to India from that part of the world, and you have so many Sufi saints. So I think that's a right place to promote Sufi music and Sufi. I know it's something like a fusion. What you do, I understand it's something new. I know very about Sufi music, but this what you're doing is something very interesting. It's not just music; it's also a dance. It's a soul connecting thing. What I feel for the Sufi, it's you're talking about soul, you're talking about God, and where you're not talking about any particular Krishna or Rama or some any religion. You're talking about connection between God and your soul. So this is Sufi, what I believe. You're very right. It's see, like they say, music is the food for the soul. Sufism is the food for the soul.
So that's what it is. So it's very, when I listen to that, some of the Sufi music is in Urdu or Hindi, some is in Persian. So even if I don't understand the language, you can really feel the depth of the music, and it's very interesting. So what we can do is we can work jointly together with government of Central Asia, like our embassy in Delhi, and also see, actually, Indian government, Ministry of External Affairs has a division like ICCR. They're doing a great job. I'm telling you, they're doing a wonderful job in a lot of countries. They have their own offices in 39 countries, ICCR, and they are very active in Central Asia because they're doing a lot of work in Central Asia, and in fact, they're creating a lot of awareness about Indian dance and music. So people really want to learn and listen and follow people like you. If you have any specific dates or plans, I can propose through ICCR for a program there for a couple of days. You can go and perform My and enjoy pleasure. art here. I, I just want to know about, as I was reading about the Kazakhstan culture. So, is this any influence by Turkish or Kazakh? Yeah, what is the language pattern? What is the food? See, And basically, what is the importance of culture exchange program? I just want to know. Not only through ICCR, is this possible if someone, some NGO like me, we would like to start something? How can we do that, and what is the procedure for that? a lot of people are already doing in the space of yoga. A lot of people are promoting yoga in Central Asia, and it's becoming very popular globally, not only in Central Asia. But Sufism actually, it connects to Central Asia, so they will have a lot of interest when you talk about Sufism. You don't have to go through the government. Government will only assist you in travel and in visa and all those things. But we can parallelly organize in association with some local cultural organizations in Central Asia. There are a lot of organizations in Central Asia which would like to, come here and perform, and also, want you to come there. So I think ICCR is basically, it's a government body. So what happens is they can help you with the travel arrangements, visas, and things like that. But the performance, there are a lot of organizations which will work with you, and you can work with them. I'll connect you to these organizations. In fact, I did discuss with them about your art and thing, and they're very keen. They said, can we have a program in couple of cities there? It's a very big country, actually. Kazakhstan is a very large country, so there's not one city. There are multiple cities you can perform. We have Astana, we have, also Nur Sultan, we have Almaty, we have, there's a place called Turkestan, which is bordering Uzbekistan, which is a city where a lot of Sufi saints are there. So that they're promoting that place. You It's a would, philosophy. Yes, yeah, yes. I yeah. got it. That My place. next question is how you promoting their young uh, culture, young artist. How are you promoting through your organization or through your culture? See, as I represent the government of Kazakhstan, I'm the consul general for two states in India, and it's a appointment by government of Kazakhstan, but approved by the president of India. So I work bilaterally with both of them. But my assignment is to promote Kazakhstan, investment in Kazakhstan, and also, culture of Kazakhstan, and also from India. So we are promoting Indian, basically business organizations and things. Along with that, I think, to me, business is just one a small part, actually. If you want to connect to a country, culture is very important. So people to people connect is what we are working on. Like, I was telling you, people like you can go and perform, train people, call them here. That's the connect we are looking at. So when we set up the center which you're working on, in that center, when we are talking about a museum, actually it's Gandhi Museum, but we will dedicate a very important area that in that museum for culture, for music, for dance, and we'll also have food and clothing. Also is another thing. The Indian clothing is become very popular, actually, in North America. Indian food is very popular. You must be knowing, globally people love Indian food. And when we talk about diplomacy, we are just not talking about government to government. We're talking about cultural diplomacy, food diplomacy also. So that's what, it's very important. I did mention to the government of India also. They agree, and our Prime Minister, Honorable Prime Minister, also was promoting, yoga, and he wants us to promote all the other forms of arts, because India has got a lot of good art, and culturally we are very rich.
We are very, very rich culturally. Are they learning yoga too? Yes, yes. Yoga is very popular there, not just in Central Asia. Yoga is becoming popular all over the world, but they are learning a lot of Indian. They learn Kathak, Kathakali. Bharatnatyam is very popular. Okay. Bharatnatyam. Even singing also, music also. Bollywood is very popular, to be honest. People love Okay. Bollywood, and see, Bollywood is popular everywhere in the world. Even in China, it's popular, not just Kazakhstan. They don't understand the language, but they love to watch Indian movies. Indian movies are very famous. Indian artists are very not recent times. Even Raj Kapoor is very, very famous even today in Central Asia. Yes. Mithun Chakravarti is very famous. People love. See, actually, what I noticed is, they really like Indians. They love Indians. Central Asians like Indians a lot, and as people to people, they have a very, very good relationship and very good connect with India. See, I told, there are two things: government to government and people to people. See, government is different. See, government can have good relations with Russia. Government can have good relations with the United States and India and all that. But people are different. People. What I've noticed is people love Indians and they have a very good connect, especially because of Bollywood and Indian music. It's very, very popular. People watch movies, and even not just Bollywood, our Indian, all kinds of art and. I will send you information of what we've done already and what we're planning to do. Regularly, we do programs. Yeah, yeah, Okay. and some local people also they have learned and they also perform local Kazakh thing. So, do they have trainers there? How they are learning? What is the Yeah, process? yeah. We have some people from India who are living there and who are working there, and they teach and train them. Yeah, we have some people from India. Some of them are doing on a voluntary basis. Some of them are employed, and some of them are doing professionally also. As a professional, they're living there and they're teaching. Various Indian music and dance also. Actually, Bharatnatyam is very popular. Kathakali also is very Kathak popular. is not popular yet. Yeah. Make it popular. Yeah. In India, I know it's very popular. It's very interesting. Actually, in Kerala, I had been to Kerala. They have similar performance, I think, in Kerala. Something like Okay. Kathak. They have story which they perform and, as a song or as a music, they perform. They tell you a story, which is also, I think, Katha is, story. It's actually all classical dances based on the stories only. They're having some stories. And in Kathak, being a Kathak artist, what I find we can relate, we have this freedom. We can improvise this. We can give our thoughts. We can connect with this, some social issues too. So whenever I perform, I believe I should give some social message. It is very much compulsory because being an artist, if you are giving some such messages, because all arts based on emotions, so people get emotional. So this is very beautiful thing if you can give any message through your art. Even movies have message. Some movies have some good message also. I mean, Yes. old movies had a lot of good messages, about What family about the system. theater? What about the theater? Are they doing theater as well? Theater is not much, but slowly, see what happened is, theater used to be very popular, in India also, in so many countries, but because of this movie, which became popular, and then it took over the theater. Like in India also we have theater, but theater Okay. has very different audience, very specific audience. People who love uh, theater is very small numbers, actually. People who watch, see, actually in India, what two things are very popular: one is Bollywood, other one is cricket. It's an equalizer. Everybody watches movie, like right from, the top person in the government to the biggest businessman to the lowest level of people. They watch movies, and same thing with cricket. So these are equalizers. So everybody, and for a very reasonable amount of money you spend, you ticket of maybe 50 100 rupees, you can watch a 3 hour movie in a theater in India. Because like, in US and all that, movies are very expensive to watch, and very few people watch one. But India, the number of people who watch movies is very big number. Bollywood or any, India just doesn't have Bollywood. We have Telugu movies, we have Tamil, we have movies, Kannada movies. They're very popular. Marathi, all kinds of movies. It's not So just Hindi. okay. So if we would like to have some theater workshop over there, so maybe there are some language barrier. They are not able to understand Hindi. They cannot connect with it. Is it so, or are they?
familiar with Hindi. Understand is see what you can't express in words, you can express in music. So you don't really need words to express what you want to see. That which comes closest to expressing the inexpressible after silence is music. You can express a lot in silence or in music. Word speaks much less than music. I'm telling you. That's And my we can experience. understand Hindi. Okay. Yeah, music can speak what you can't put in words. Music has that depth, that connect. So people, that's why people love music. See, people are, when I know some very very big people globally. They're f- fans of some Indian music artist and all that. Big people, they love them, they follow them. And India has some very very prominent personalities in music. Especially in Hindi, the A.R. Rahman, is very popular globally for his music. And Lata Mangeshkar ji was very popular with a lot of people globally. She's no more. We miss her. So there are a lot of artists, Asha Bhosle, and even in performing arts in movies, there was Hema Malini, who was very very popular. Very good artist. They are not just actors; they are also artists like you. Yeah, who perform very well. Yeah, yeah. No, we have some very, very good talent in India and very good art. What we should do is promote it globally. India, according to me, India has a lot of talent, lot of art, and lot of music, and lot of good performers, excellent performers. So only thing is we have to connect them. And but India, what has happened is Bollywood has become so popular. So all the music also is Bollywood music or movie music. Whereas if you go to America, there's something called parallel movie music thing. They have music artists like Michael Jackson. He's not a part of Hollywood. There are a lot of people like Michael Jackson. There were other people like before that. There were Beatles. There were so many of them. Even now there was very big groups. So they have two things. They have there's very little music in Hollywood. The music in that part of the world is mostly parallel music, which is not a part of movie music. India, most of the music is dominated by movie songs. Now ghazals have become very popular. Actually, Jagjit Singh ji was a fan. I'm a fan of Jagjit Singh ji. He was an Okay. excellent artist, and he has great following. Whenever he perform everywhere: Australia, London, United States, Middle East. Believe me, they were not just Indians. There were so many people who from the local population who would come for his concert. Their concert was always overbooked and full. Even Lata Mangeshkar ji also, Albert Hall in London. Now wherever they performed. So Indian music is very not just. I'm not talking about just Bollywood music. Music other than Bollywood also is very popular, like ghazals and bhajans also. We have other artists like Anup Jalota and Pankaj Udas. They're very popular. They're very big artists. Yeah. I am speaking only about Hindi. I'm sure there must be very big artists in other languages also. There must be people singing other languages because I speak Hindi, so I'm more familiar with Hindi. So I'm not discriminating, but I'm sure there are great artists in other. Apart from singing, we have Hari Prasad Chaurasia ji, we have Pandit Ravi Shankar, we have Zakir Hussain. They're Okay. gems. Telling you they're globally so popular, and their music is, in fact, some of the music was played in some of the highest places in the parliaments, in the United Nations, and in the space station. Their music was played in places like that. Some of our Indian artists who are not a part of our music industry. So India has a lot of talent. I'm telling you one thing. It's not just people. The one thing I've noticed in some countries is people think that there's only film music. India has much more to art and culture than film music, movie music. Movie has become very popular. It's like cricket has become so popular. Other sports have become weak in India because cricket is a big game. Same thing. Bollywood is so big that it has affected a little. Honestly, it has affected a little bit of other parallel music, which now coming back. Actually, ghazals have become very popular. In fact, there are a lot of very famous singers in India. I don't know. You should tell me what are the other languages, where you can perform in those countries other than Hindi. Yeah, I can perform. Actually, that you told like earlier when we were discussing about it. So I'm a dancer. I follow rhythm. So there is Okay. no language barrier for me. I can understand the bhava paksha. I mean, to say expression parts, and I can perform on that. So language is. I don't think it's a big issue for any artist.
if they are performing. So they can, they can understand very well emotions. So we get connect through this emotions only. No, I am telling you, music can speak more than words. Yes. Honestly, art can speak more than words, more than you can say a lot of things. And I think music doesn't have any language barrier because there's non-vocal music also. People play drums, people play guitar, people play harmonium, so many things. You don't need to have words there. In fact, Zakir Hussain ji was played in United States so many times, and people would love listening to his tabla. Pandit Ravi Shankar ji was so popular. He still is. His music is. Harish Chaurasia ji, all these people are great artists, and they have. I'm telling you, they have promoted all of you. It's not just politicians or bureaucrat diplomats who promote India. It's artists like you who also promote India. India has become famous not because of his prime minister. They are big people. I am not saying they are nobody, but not just the prime minister, the president, and all that. India has become famous for his artists, is for because of Correct. of their Yeah. other people like sports personalities. There've been some great sports personalities in India, and they've been very great artists. So India is known not only for politicians or diplomats. I'm in diplomacy. It's not known for us only. It's known more for people like you, people who perform, who are, culture. Culture is very big actually. Culture is huge. I think culture can bring people together. Governments can bring up to a certain extent. It's more of beat government to government, but culture can bring people together. If you want to bring people together, culture is very very important. Food and culture. Yes. I would like to know about what is your next plan for this culture exchange program. What do you think are what are changes are needs, and what you can do? Yeah, see what happened is I'll tell you because of COVID, there was a lot of restriction on travel, so we have postponed a lot of our plans for cultural exchange. Now all the COVID is now settling down. It's under control, so restrictions have been lifted. Now we want to restart what we've been working on, and we would like to mostly promote apart from business actually, government to government and business economics that will happen parallelly, but we want to promote apart from yoga. Yoga is definitely very very popular, so it's happening on its own. We would like to parallelly promote Indian dance. Music is, I said Bollywood is very popular. I don't have to promote Bollywood. Bollywood is popular on their own. People watch or and you don't really have to promote these films and all that thing. We do a film festival also, but those are been happening for a long time. Now I think it's time for us to promote alternate music, art, and culture other than movies. Movies also we promote, but we would like to promote, and we are seriously working on. I was telling our museum will build a museum, which is our next step. Will be very quick actually. We'll build a museum which will have a lot of space for music, art, culture, and food and clothing. Indian. We want to be very specific. It just not be a museum for Gandhi Museum. Along with that, we want to focus very, very seriously on dance actually. Dance, Is there Indian any dance. scholarship for the Yes, young yes, artists? yes, there I is. mean, yeah. From both the governments, yes, we have from both the governments, and government is very keen to promote. In fact, next time when I'm in Delhi, I ICCR just only? tell. Are you talking about ICCR only? No, 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 not just ICCR. There are a lot of others. ICCR promotes very extensively. ICCR has the funds also, but apart from ICCR, there are a lot of non-government organizations also which support. They're from India and from both the sides. ICCR is promoting actually a lot of Indian culture and art in so many countries, and they focus a lot on Central Asia. I think recently minister also visited Central Asia. Meenakshi Lekhi ji. So Okay. I think we should have a joint meeting with the minister and also with ICCR to discuss on this because the government is important in terms of travel, in terms of visa and all those things. They'll help because if you want to go there and stay there, perform, we need some assistance from government. And since funds are available, government can also fund you because the funds are very specific to culture. They cannot be used. We have different fund for different areas. We have economic line of credit is there from the government for Central Asia. Then there is government of India has
various other funds for economic activity, but they also have fund for cultural activities, which can be used only for culture. They cannot be used for any other purpose. So I think we should work together on that. And if you have, just look at your calendar and say, see when you can travel, then we will like to travel maybe. It's the actually the weather in Central Asia is, especially Kazakhstan is a very cold country. The weather in winter is very cold. So I think now April, May, June is good time to travel. So whenever you will invite, we will come over there. Thank you. Yeah. My Maybe last question. Yes. My maybe last question is that if somebody is coming to Kazakhstan, to what they need to explore it, tourist, food, what is your advice for them? see, Kazakhstan is a very big country. They have a lot of winter sports also. More than that, I'll tell you what is fruits of Kazakhstan. Apple is the original fruit of Kazakhstan. Apple is a Kazakh fruit, and flowers wise, if you like flowers, tulip is the original flower of Kazakhstan. It's a wild flower. Tulip is not from Holland. Tulip is originally from Kazakhstan. So these are the two things, and there's a lot of local food, but there is a lot of food which is local. Local cuisine is mostly non-vegetarian. They have the pulao is mutton, and they have shorba and all that. People who are non-vegetarians can eat that, but Like they a also have. small, yeah, it's like a Lucknow, that food habit similar like Lucknow. Very non-spicy actually. The difference between their food and our food is the only difference is spice. They also eat rice and meat. They also eat the shorba, which we eat in India. But the thing is, they don't eat spice. It's totally non-spicy. See, India, we love spice. We eat chili. We eat all other spices like garam masala and all that. The spices, they don't eat spicy food. They eat very less spicy food. Language is one thing. They speak Russian and Kazakh language. English also, obviously, they speak English. But language is mostly Russian and Kazakh. But for people like you, language is not a barrier. Honestly, music has no language barrier. I've seen I listen to music which I don't understand. I listen to music in so many languages, Indian languages. I can understand Telugu because I come from Telangana, so I'm Andhra Pradesh. So I can understand the local language, but I listen Tamil also sometimes. I like some Tamil music. I listen to Korean songs. I don't understand Korean. Some of the Korean songs are very interesting. Tamil songs are very interesting. For somebody who likes music, it's not just the words. It's a tune. It's so many things. Yeah. Dance is especially, this great art. For dance, you don't have to know language. You can enjoy any dance. You can enjoy, Indian, you can Western, any dance. Music is the same thing. I like Western music. I also, my favorite is Sufi music, but I still listen to Western music also. We grew up listening to Western. There's a lot of Western influence in the schools we went to. So we always listen to Western music, because everybody used to listen. But personally, I like, I come from a royal background, royal family. So we have the gharana, we had Panditji, which for generations working for a family. So Panditji used to sing only for my family. He used to stay in a place in Karnataka, in Gulbarga. He would come every month and we would have one session of music. And I know he was a great singer. My father asked him to come and relocate to Hyderabad. He said, no, I cannot leave my You where I also live. sing? No, I'm not a singer, but I love to listen to all kinds of music. I'm very Okay. fond of music. In fact, when I was in college and all that, we used to listen to music, at least couple of hours every day. Because of so many assignments, traveling, all that, it's become less. But whenever I feel, a little tired and all that, for me to relax, the best is to listen to music. Even today, doctors are advising people, if to Therapy. come out of Yes. depression and all those things, people who are not feeling well, people not feeling good, they're advising them to listen to music. There are particular ragas. There are particular ragas for particular illness. So yes, and Really, this is also my experience is, when I feel a little low and I'm not depressed as such, I'm a very happy man. But when I get tired and all that, the best form is just by myself in my room, just sit by myself and listen to some good music. It makes me feel so, very as nice. such, yes. Sorry to interrupt you. As such, it was my last question, but there is one question from Mr. Sanj Kumar. He is asking, ki, sir, any pure vegetarian people lives in Kazakh? Sir, pure vegetarian people.
There are a lot of Indian, you get vegetarian food everywhere. See, you have vegetables and you have a lot of fruits and you also have vegetarian food. But it's not like in India. In India, what happens is every dish you can make in a non-vegetarian, you can make in vegetarian. You make something in chicken, the same thing you can make in, gobi or aloo or something I'll like that. make the same gravy. You are a very good cook, sir. No, everything can be made and everything like samosa, you have no, mutton samosa, you have vegetable samosa. You name a dish in India, it has you have chicken biryani, you have vegetable biryani, you have pulao, you have vegetable pulao. You name it, you have it. But there it's not like that. Vegetarian food is vegetarian, non-vegetarian is non-vegetarian. So they have a lot of salads actually. They eat a lot of salad and also fruits. They have local vegetarian food also. They eat rice and they also eat wheat and they have their local curries. But mostly the vegetarian food, what you get in those countries is Indian vegetarian. We have Indian vegetarian food available in Indian restaurants. All the five-star hotels and all that have a lot of vegetarian food. But it's a challenge to get vegetarian food like in India. The kind of vegetarian food you can get in India, it's amazing. You can't get that kind of, because especially you have in India, it's not just one place. You have Gujarati food, which is very nice. You have North Indian, you have dal makhni, you have paneer butter masala, you have the Indian roti and all that, which is amazing food. India has very good food. Then you go to Maharashtra, you have a lot of vegetarian. In our part of the state, we have a lot of vegetarian breakfast. We have the idli, you must have tried sometime. We have the idli is a rice cake here. Then we have the dosha, which is also vegetarian. We have the vada. The entire breakfast what we have here is vegetarian. It's entire that kind of vegetarian you will not get anywhere in the world. Maybe in Yes, some countries which are purely vegetarian, but India has the best vegetarian food. They also have the Indian vegetarian. So you can ask for Indian vegetarian. They don't have very local vegetarian, but a lot of Indian. Italian also, pasta and pizza. You can get Italian pasta vegetarian, pizza vegetarian. And sushi is also there, vegetarian, which is Japanese. There are a lot of Japanese food available. See, every cuisine globally has some vegetarian. Japan has they eat a lot of seafood, but they have vegetarian also. Italian has a lot of vegetarian pizza and things like that. And then you also get vegetable burgers and things like that, which is not Indian, but this vegetarian. very true. And when you all come there, we will definitely promote. That's what I was saying. Food diplomacy. We would like to promote Indian food. When I say Indian food, I talk about Indian vegetarian food. Yeah, we would like to That's promote true. Indian food. It's lot of This is, demand for Indian food. A very yeah, this is very all about culture exchange. Food is also there. food diplomacy is very big. Indian food is very popular globally, and especially Indian vegetarian food. That's what we are planning to do. When I'm talking about the museum, I'm not just talking about I'm talking about art and culture, music and food and clothing. Indian clothing is also very popular, very colorful, very beautiful. Okay. Unlike their Do you clothes, they make. have exhibition for that Kazakh that clothing that upcoming days? Do we have in Delhi any exhibition or in any Yeah, other country? exhibition. Embassy does exhibition of food and clothing also. They grow a lot of cotton in that part of the world. They have good cloth also, but Indian clothing, Indian clothing is very colorful. Unlike the Yes, Western world, they wear in weddings and all that. Mostly they wear black and white. Men yes, wear yes. black, right, in Middle East, in even the United States. But in India, if you go to, I have a lot of diplomatic guests who come for the weddings in our family. I asked them, what do you like the best? They said, one is, it's just a big affair. Other thing, the colors in Indian weddings, you cannot find anywhere. You find women in all color, all clothes of all color. You name the color, somebody will be wearing that color. Yeah, And it's that's true. so colorful. Indian weddings are very colorful. Unlike I attend a lot of weddings abroad, they're all black and white because mostly people wear either black suit or white clothes with women. Indian wedding is the most colorful. That's true. Yeah. Yes. So, sir, thanks a lot for Thank you joining so much. us today. Thanks a lot for So, giving me time. looking forward to seeing you in Means a lot. Kazakhstan. So, my pleasure. Thank you I'm so much. waiting for your invitation. Thank you, sir. Sure, soon. Thanks a lot. Plan soon. Yeah. Thank you so much. Thank you. Very glad to see you. Yeah. Thank you, Thank sir. you. Thanks. All the best. May God Thank bless you. thank you, sir. Namaskar. Stay safe, stay healthy. You too, sir. Thank you. Thank you. Bye bye.
रिस्पेक्टेबल मेरे नासिर सर को। आप सुन रहे थे कल्चर एक्सचेंज के बारे में, उनके व्यूज। और आप देख सकते हैं जब हम कल्चर एक्सचेंज की बात करते हैं तो वो सिर्फ कलाओं का ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये कलाओं के लिए एक्सचेंज हो रहा है। इट मीन्स वी आर मेकिंग आवर रिलेशनशिप ब्यूटीफुल विद अदर कंट्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कला उसके लिए एक ऐसा माध्यम होती है कि हर कोई उसे समझ सकता है। एज वी हैव डिस्कस अर्लियर कि देयर इज नो बैरियर फॉर द लैंग्वेजेस, दे कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। म्यूजिक होता है तो सब सभी अपने इमोशंस को कनेक्ट कर सकते हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड सोलफुल कनेक्शन between audience and between artists. So yes, और जैसे कि जितने भी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हमारे अभी जो अगले अतिथि हैं वो हमसे जुड़ने वाले हैं, जो श्री राजकुमार नायक जी हैं। एक्टर हैं, एमिनेंट एक्टर, थिएटर है, डायरेक्टर है, संगीत नाटक अकादमी अवॉर्डी। तो मैं आपसे बात कर रही थी कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में। तो जितने भी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, जब भी वो बाहर किसी भी देश में जाते हैं परफॉर्मेंस के लिए, तो महसूस होता है कि एक भारतीय होने के नाते आपके पास कितनी ज्यादा शक्ति है, कितनी पावर है कि आप अपनी बात को कितने सुंदर भावों के साथ कह देते हैं। क्योंकि हमने वेद पढ़े हैं, वेद को सुना है, उनके भावों को देखा है। और अगर आप किसी इंडियन आर्ट से जुड़े हुए हैं तो अ, आप देख सकते हैं नाट्य शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो नाट्य शास्त्र में सभी कुछ है। और उसके साथ आप कलाओं को सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि जो नौरस होते हैं वो उस कला के माध्यम से आप अपने दर्शकों को कहते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पास इतने सारे एक्सप्रेशंस होते हैं जिसको हम कन्वे कर पाते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारा ये जो फेस्टिवल है 45 डेज का एक ऑनलाइन फेस्टिवल है, मैं आपको बार बार हर शो में बताती हूँ। तो अब उसमें हमने हमारी कोशिश हमेशा ही रही है कि हम अलग अलग कलाओं से लोगों को बुलाएं और उनके बारे में कुछ जाने। और इसलिए वो जानना भी इसलिए जरूरी है कि बीइंग एन आर्टिस्ट, व्हाट डू यू फील एक्चुअली, आप कैसे एक्सप्लोर करते हो, क्या क्या चीजें आप महसूस करते हो। क्योंकि एक टाइम बाद देयर इज वन सर्टेन पॉइंट, समटाइम वी फील वेरी लो, वी डोंट नो व्हाट इज द नेक्स्ट, हाउ टू गो। सो जब ऐसे एमिनेंट आर्टिस्ट से हम मिलते हैं तब हम जान पाते हैं कि दिस इज द सेम वे where I was thinking to give up this thing, or not doing or not taking as a full-time career. So yes, it is very tough to understand being an artist, what is the right way, who is the right guru, who is a what is a what should be next actually, अब अगला कदम क्या होना चाहिए। तो yes, एक पूरी प्रोसेस होती है आर्टिस्ट कहलाने तक की। मैं तो अभी भी मानती हूँ कि इतने सालों में भी ये कहना कि मैं कलाकार हूँ कहीं ना कहीं लगता है नहीं, अभी नहीं, अभी कैसे, अभी तो ये सफर बहुत है। तो कला को आकार देना, कल को आकार देना, वही एक कलाकार का माध्यम है। हम इंतजार कर रहे हैं श्री राजकमल नायक जी का। जैसे कि मैंने आपको बताया, इज एन एक्टर, एमिनेंट थिएटर डायरेक्टर एंड संगीत नाटक अवॉर्डी है। कुछ टेक्निकल इश्यूज है इसलिए आपसे बातें करने का भी मुझे मौका मिला है। तो लेट्स टॉक अबाउट क्या
सर सर नमस्कार। अंजना नमस्ते वेलफेयर नमस्ते। सोसाइटी और अमर उजाला के इस मंच पर आपका स्वागत है। आपका इंतजार मैं काफी देर से कर रही थी। कैसे हैं आप? ठीक हूँ ठीक हूँ। आज मैं थोड़ी सी ठीक नहीं हूँ। फीलिंग अब थोड़ा सा फीवर है। हम लोग संक्षेप में बात करेंगे और आधा घंटे में मैं चाहूंगा कि ये खत्म हो जाए। मैंने टाइम बिल्कुल आधा घंटे का ही रखा है, मैं भी, क्योंकि नहीं चाहती कि आप परेशान हो ज्यादा। सर, आज का जो हमारा विषय है काव्य और रंगमंच, क्योंकि मैंने आपको पहले बहुत सुना है और संगीत नाटक एकेडमी की कुछ वर्कशॉप, क्योंकि आजकल सारी चीजें ऑनलाइन है तो बहुत सुनने का मौका मिला है इन दिनों आपको। तो मैंने देखा कि आपने काफी काम किया हुआ है कविताओं और रंगमंच के साथ। तो वो कैसे, कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे आप करते हैं, क्या सोच होती है उसके पीछे? मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा कि काव्य और रंगमंच का जो रिश्ता है वो अति प्राचीन समय से रहा है। और हम ये देखते हैं कि हमारे जो वैदिक काल है, वेदों में ऋचाएं हैं, साम हैं, तो ये जो गीतात्मक रूप है ये वेदों में भी समाहित है। यानी काव्य से हमारा आदिम रिश्ता है। और हमारे संस्कृत काल के सारे नाटकों को आप देखें अगर, तो लगभग 10वीं शताब्दी तक, उसके बाद तो वो विच्छिन्न होकर परंपरा इधर उधर चली गई बहुत सी, और लोक तत्वों में विलीन हो गई, लोक में चली गई। लेकिन आप देखें कि चाहे वो भास हो, चाहे कालिदास हो, शूद्रक हो, भवभूति हो, वहां से लेकर राजशेखर और मुरारी तक, ये हमें देखने को मिलता है कि काव्य उसका एक आवश्यक घटक रहा है, बहुत आवश्यक तत्व रहा है और एक तरह से अनिवार्य तत्व भी रहा है। हम संस्कृत नाटकों को देखते हैं तो उनकी शुरुआत भी होती है नांदी पाठ से और अंत होता है उनका भरत वाक्य से। और उनमें सारी जो है जितने तरह के रस हैं, छंद हैं, उपमाएं हैं, अलंकार हैं, तमाम तरह की बातें जो है, या काव्यमयी भाषा है। तो कुल मिला के इससे हमारा रिश्ता आदिम है। हमारी दैनिक दिनचर्या में भी अगर आप देखें, समूचे जीवन में और चप्पे चप्पे में, यानी आप किसी कोने में चले जाइए, जनजीवन में व्याप्त है संगीत और नृत्य और गीत। और कई तरह के लोकगीत हैं, कई तरह के शास्त्रीय गीत हैं, कई तरह के सुगम संगीत है हमारा। तो ये सब तो हमारा एक अविभाज्य अंग है। लेकिन एक दौर ऐसा आया जब यूरोपियन थिएटर के हाव भाव से युक्त जो रियलिस्टिक किस्म का थिएटर आया, उसमें काव्य से हमारा रिश्ता एक तरह से टूटा है। और हम देखते हैं कि उस काल के बहुत से नाटकों में कविताएं हैं नहीं, कहीं से कोई शामिल नहीं है, या गीत संगीत भी उतना शामिल नहीं है। लेकिन फिर एक हमने लोक शैली को अपनाया, कई तरह की शैलियों को अपनाया। और अगर हम और देखें कि संस्कृत काल के बाद भी हमारा पारसी थिएटर हो या भारतेंदु युगीन रंगमंच हो या प्रसाद के नाटक हो, ये तमाम तरह के बहुत सारे नाटकों में हम देखते हैं कि ये तत्व तो आवश्यक रूप से शामिल है। यानी कविता का शामिल होना या गीत का शामिल होना या काव्यमयी भाषा का शामिल होना एक अनिवार्य घटक सा रहा। लेकिन ये रिश्ता अगर टूटा एक रियलिस्टिक किस्म के थिएटर के दौर में, यूरोपियन हाव के थिएटर के दौर में, तो फिर बहुत जल्दी ही फिर से एक परिवर्तन आया, एक बदलाव सा आया और हमने फिर रिश्ता जोड़ा। और लोक शैली के नाटक हों या तमाम तरह के नाटक, आज बहुत सारे नाटकों में गीत संगीत अनिवार्य तत्व की तरह फिर से शामिल हो चुके हैं और लगभग पिछले 40-50 वर्षों से ये शामिल हुए हैं। और मैंने जिन लोगों के साथ काम किया उनमें बीवी कारंत हो या हबीब तनवीर हो या तमाम तरह के लोग हैं, तो उन लोगों का तो बहुत अभिन्न अंग था उनके नाटकों का संगीत और गीत। 20वीं शती में क्या हुआ कि एक तरह से फिर से काव्य शैली के नाटक लिखे गए। बहुत तरह के समर्थ लेखक हमारे सामने आए, चाहे वो सुमित्रा नंदन पंत हो, मैथिली शरण गुप्त हो, दिनकर हो
और अज्ञेय हो, निराला हो, नरेश मेहता हो, तमाम तरह के लोगों की एक फौज सी हमें दिखाई देती है। और ये जो इन्होंने फिर से बहुत सारे ऐसे नाटक लिखे, धनवी भारती हो, भारत भूषण अग्रवाल हो, उदय शंकर भट्ट हो, दुष्यंत कुमार हो, एक कंठ विश्वाई जैसे नाटक हमारे सामने आए, नरेश मेहता का संशय की रात हमारे सामने आए। तो बहुत तरह के नाटक फिर से एक तरह से पुनरुज्जीवित हुए। लेकिन मैं जिस कविता के रंगमंच की बात कर रहा हूँ, ये कविता का रंगमंच इन सबसे अलग है, बिल्कुल इतर है, बिल्कुल अलग है, फर्क है। आधुनिक जो भी कविताएं लिखी जा रही हैं या बहुत पुरानी भी जो कविताएं हैं, उनमें कोई आदि है ना मध्य ना अंत है उस तरह का। और जो नाटकों की चीजें हैं, जैसे कथा वस्तु है, कथोपकथन है, कथोपकथन है, चरित्र चित्रण है, घटनाक्रम है, चरमोत्कर्ष है, उपसंहार है, ये सब कविता में हो आवश्यक नहीं है। कुछ बड़ी कविताओं में हो सकता है कि कुछ नाटकीय किस्म की कविताओं में इस तरह की चीजें हों, लेकिन अधिकांश जो कविताएं हैं वो एक तो नाटक के लिए तो रची नहीं गई, इनकी रचना तो हुई है पाठक के लिए। पाठक इनको पढ़ता है, समझता है, एकांत में परिभ्रमण करता है, वो उसके अनुभव संसार में उतरती हैं, वो उसको अपने अपने ढंग से ग्रहण करता है। लेकिन यहाँ अगर हम उसको कविता के रंगमंच में लेकर आते हैं तो यहाँ प्रेक्षक है, बहुत सा दर्शक है जो उसको देख रहा है और अनुभव कर रहा है। और यहाँ अभिनेता शामिल हो गया है, यहाँ संगीत भी, ध्वनियाँ भी शामिल हो गई हैं, यहाँ प्रकाश भी है, थोड़ी मन सज्जा भी है, और सबसे बड़ी चीज है एक्टर उसको कह रहा है। और एक्टर का उच्चारण हो, आरोह अवरोह हो, कई तरह से स्पीच हो, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। हम ये कोशिश करते हैं कि कविता का सर्वांग संप्रेषण होना चाहिए, कविता पूरी तौर पे उन तक पहुंचे, और उसके चाहे वो प्रतीक हो, चाहे बिंब हो, चाहे अर्थ ध्वनियां हो, चाहे उनके शब्दों की अर्थवाहकता हो, वो प्रेक्षक तक बहुत पहुंचे, गहराई से पहुंचे, और वो अपने ढंग से इसको ग्रहण करें। तो ये कुछ बहुत मोटी बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। ये ना तो ये कवि सम्मेलन है, ना ये कविता का नाट्य रूपांतरण किया गया है, ना ही सिर्फ ये पाठ है, ये कुछ अलग है। और इसलिए काव्य नाटक से भी बहुत अलग हो जाता है ये। और इसमें हमें बहुत गहराई से, जो हम थिएटर में बात करते हैं, कुछ चीज़ें जो मैं जिनको बहुत आवश्यक मानता आया हूँ अपने जीवन में, कि जैसे ऑब्जर्वेशन, एक होता है देखना, एक होता है गहराई से देखना। ध्यान और अवधान की हमारे यहाँ परंपरा भी रही है। तो गहरे देखना, जैसे कि मान लीजिए कि हम एक वृक्ष को, एक पेड़ को कोई आदमी देखता है, तो देखेगा बड़ा सुंदर सा पेड़ है, बड़े अच्छे पत्ते हैं, बड़े अच्छे फूल हैं, बहुत बड़ा है, विशाल है, या छोटा है, या जो भी है। लेकिन एक कलाकार जब देखता है, एक चित्रकार जब देखता है, तो वो उसको बहुत गहराई से देखता है, वो उनके सारे आकार प्रकार देखता है, वो टहनियों को देखता है, वो पत्ते जो हवा में हिल रहे हैं उनसे जो आकृतियां बन रही उनको देखता है। या मान लीजिए कि वृक्ष के पीछे कोई एक घर है, उसकी एक खिड़की खुली हुई, जहां से आती हुई एक छोटी सी रोशनी की किरण उसको दिखती है, वृक्ष में एक रोशनी की किरण, और या खुला हुआ दरवाजा, उससे रोशनी आती हुई, या पक्षियों की आंखें, या छोटे 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 उसमें जो फूल आने के पहले जो चीजें हैं, तो वो कई तरह से देखता है। जैसे हम किसी नदी के किनारे एक वृक्ष लगा देखते हैं, और उसकी जब हम छाया को नदी में देखते हैं, और लहरों में वो कितने सारे आकार ग्रहण कर लेती है, कितने तरह के रूप ग्रहण कर लेती है।
तो सीधा सीधा स्थूल रूप में यथार्थ को ना पहचानते हुए उसको वास्तविकता में और समग्रता में पहचानने की चेष्टा का ही नाम थिएटर है। इसीलिए ऑब्जर्वेशन पावर बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी निर्देशक के लिए। और फिर हम इमेजिनेशन की बात करते हैं तो एक्टर की कल्पनाशीलता के लिए भी थिएटर बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सा विजन खुलता है, दृष्टि, किसी भी चीज को देखने का नजरिया, गहरा नजरिया ही उसको विशिष्ट बनाता है। वरना तो वो एक जीवन में घुली मिली चीजें हैं। लेकिन जब हम यथार्थ को भी देखते हैं तो यथार्थ को बहुत गहराई से देखते हैं और उसमें से तत्व निकालते हैं। और थिएटर कोई भी कला तो जन्मी इसलिए है कि मनुष्य को सजग सचेत कर सके, उसका रंजन कर सके और बहुत सारी उसको ऐसी चीजें दे सके जिससे ये समाज थोड़ा बेहतरी की ओर आगे बढ़े, थोड़ा बेहतर हो सके ये समाज, इसका थोड़ा परिष्कार हो सके। ये जितना भी साहित्य और कलाएं हैं ये मनुष्य की प्रोन्नति के रसायन है, ये उन्नत बनाने की दिशा में उठे हुए कदम है। और अगर हम ये देखें कि यहाँ पे कविता जो है इसमें शब्द बहुत कीमती, और शब्द किफ़ायत शारी का नाम ही है कविता, शब्दों की किफ़ायत शारी। बहुत बहुत हीरे मोती की तरह, नगीने की तरह जड़े हुए शब्द हैं। इसलिए मैं शब्दों में कोई फेरबदल नहीं करता, उसमें कोई काट छांट नहीं करता, किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं है यहाँ। जबकि नाटकों में हम बहुत से एडिटिंग करते हैं और एडिशन भी करते हैं, या एक्टर अपने तरह से संवाद को बोल लेता है, कभी कभी उसको बोलने की सुविधा को अपने ढंग से डील करता है। लेकिन यहाँ पे ये सुविधा नहीं है कि आप किसी तरह की एडिटिंग करें या एडिशन करें। लेकिन फिर उसके प्रतीकों का क्या करेंगे, उसके ध्वन्यार्थ का क्या करेंगे, उसके बिंबों का क्या करेंगे, इसलिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। इसीलिए फिर मैं एक शब्द कहता हूँ कि सर्च। सर्च बेहद महत्वपूर्ण शब्द है किसी भी कला के लिए। सर्च शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे थिएटर के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक और महत्वपूर्ण शब्द जो मैं कहता हूँ, प्ले। ड्रामा को प्ले कहा गया है ना, कौन सा नाटक, कौन सा प्ले है आज। तो प्ले करना शब्दों के साथ भी खिलवाड़ करना, प्रॉपर्टी के साथ भी खिलवाड़ करना, स्पेस के साथ भी खिलवाड़ करना, संगीत के साथ भी खिलवाड़ करना, सज्जा, मंच सज्जा के साथ भी एक तरह के प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना, और उनसे फिर धीरे धीरे चीजों को ग्रहण करना। और इसलिए तरीके इस तरह के हैं कि एक कवि की पूरी कविताओं से आप गुजरें, उसके समूचे लेखन से अगर आप गुजरते हैं तो आपको पता चलता है कि कवि की थिंकिंग क्या है, किस तरह का लेखन है, किस तरह की सोच है, किस किस तरह के उसने एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो क्या कहना चाहता है, फिर आप उसको कैसे ग्रहण करते हैं और अपनी स्पीच के जरिए या अपनी रंग युक्तियों के जरिए या अपने तौर तरीकों के जरिए या ध्वनियों के सहारे या आलापों के सहारे, संगीत के सहारे, सेट के सहारे कैसे उसको जीवित कर पाते हैं आप पूरी कविता को, कि कविता बोलने लगे, कविता खुद बोले। एक हिंदुस्तान के महानतम कवि रहे हैं शमशेर बहादुर से, तो उनका ये कहना रहा है कि बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। तो आपकी बात जो है वो भेद खोलेगी जब आप कविता को इस तरह से करेंगे कि कविता ही स्वयं बोलने लगे। यानी अभिनेता तो बोल रहा है लेकिन कविता अपने आप में बोलने लगे। इसीलिए मैं कुछ चीजों को बार बार कहता हूं कि मेरे कविता के रंगमंच का अर्थ ये भी है कि कविता को खोलना, कविता का खिलना, कविता से खेलना, ये सब काम हम करते हैं। आप देखिए कि मनुष्य जो है बहुत ही बड़ा जादूगर है। उसने क्या किया है
उसने ध्वनियों को शब्दों में बदला और शब्दों को ध्वनियों में बदला। आप नृत्य से जुड़ी हुई हैं, आप जानती हैं मुद्राएं, गतियां, पद संचालन, तमाम तरह की चीजें, इनसे शब्द व्यक्त होते हैं। आप पैर से बोल निकालते हैं, पद संचालन से हम कई तरह के बोल निकाल देते हैं, कई तरह की मुद्राओं से हम कई तरह की भावभंगिमा प्रकट कर देते हैं। इस तरह से तमाम रसों की उत्पत्ति हम कर देते हैं। माइम क्या है? माइम में देह ही तो बोलती है, वहां शब्द नहीं है। शब्द के बजाय देह की भाषा है, और रंगमंच वैसे भी दैहिक भाषा भी है। अगर वो शब्द भी है वहां तो दैहिक भाषा भी है। और मौन का भी उतना ही महत्व है थिएटर में, जो किसी भी कला में उतना नहीं है जितना थिएटर में। यानी पॉज सबसे महत्वपूर्ण शब्द हो जाता है हमारे लिए। तो ये 3-4 तरह की चीजें जो ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, सर्च, प्ले, ये सिर्फ शब्द मात्र नहीं है, इनको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है और करने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि कविता का रंगमंच ना तो ये कवि सम्मेलन है, ना कविता का पाठ है, ना नाट्य रूपांतरण है। कविता कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कहती है। तो कविता की पंक्तियों के बीच, कविता के आर पार, पंक्तियों के आसपास जो कुछ भी छिपा हुआ है, जो भी हम तो ये बात भी करते हैं ना, बिटवीन द लाइंस की बात हम करते हैं थिएटर में। बिटवीन द लाइंस क्या है, वो करो एक्ट। तो ये सब की तलाश के कविता की गूंज हमें सबको सुनाई दे। कविता जो भी कह रही है, उसकी जो भी अनुगूंज पैदा हो रही है, जो भी ध्वन्यार्थ प्रकट हो रहे हैं, उनको भी हम समझ पाए, ये महत्वपूर्ण बात है। मैं ये कहता हूँ कि मजे मजे की बात है, ये रंगमंच बहुत बड़ा लालची है। ये लालची कला, ये लालसा से भरा है, लबालब, बड़ी ललक रहती है इसको। हर तरह की चीज कर दो, हर तरह की कला को इसमें शामिल कर लो। यानी हम निबंध भी कर रहे हैं, हम डायरी भी कर रहे हैं, हम कविता का रंगमंच भी कर रहे हैं, कहानी का रंगमंच भी कर रहे हैं, उपन्यास भी कर रहे हैं, और नाटक तो कर ही रहे हैं जो लिखे हैं नाटककारों ने। तो बड़ा लालची सा है, लेकिन ये लालच बहुत अच्छा है, ये बुरा लालच नहीं है। और कला का समुच्चय है, रंगमंच कला का समुच्चय है। तमाम तरह की कलाएं हैं उसमें, संगीत भी है, नृत्य भी है, तमाम तरह की, पेंटिंग भी है, सब तरह की कलाएं शामिल हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो कलाएं हैं अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती हैं, ये अपनी सत्ता का विलीनीकरण करती हैं रंगमंच में। यानी अपनी स्वतंत्र सत्ता को विलीन करते हुए रंगमंच में मिला देती है, और रंगमंच फिर ऐसा घोल पैदा करता है जिससे कि वो बड़ा पावरफुल हो जाता है, बहुत ताकतवर हो जाता है। और ये तमाम तरह की कलाएं उसको सहयोग करती हैं, कोऑपरेट करती हैं। जैसे वो हमारी सगे संबंधी हो या हमारे पुत्र इतने आत्मीय हो कि हमारी धड़कन हो, समझ लो। तो रंगमंच की धड़कन है ये सारी कलाएं, और ये सब मिलके एक साथ धड़कती हैं, तब वो जीवित रहता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। हमारे जो गुरु थे बीवी कारन जी के साथ मैंने बहुत काम किया, उनके साथ बहुत रहा भी हूँ। वो कहते थे कि थिएटर में घराना होना बिल्कुल ठीक नहीं, बल्कि बुरा है। जबकि हम संगीत में, नृत्य में ये चाहते हैं कि घराना हो, हम किसी न किसी घराने से जुड़ते हैं। लेकिन थिएटर में घराना होना बुरा है, क्योंकि एक सब वहाँ ये गुरु शिष्य की परंपरा भी उस तरह से नहीं है जिस तरह से संगीत और नृत्य में है। गुरु मानते हैं हम भी, लेकिन गुरु शिष्य की वो परंपरा नहीं है जो संगीत और नृत्य में है। ये इसलिए भी है कि अलग अलग तरह के नाटक हैं, अलग अलग तरह की कहानियां हैं, अलग अलग तरह की शैलियां हैं, तमाम तरह की शैलियां हैं, उनमें आपको काम करना है। और अगर आप
गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए, एक तरह के घराने का निर्वाह करते हुए अगर आप करेंगे तो एक जैसे नाटक पूरे देश में होने लग जाएंगे। तो ये इसीलिए इस अर्थ में भी ये ठीक नहीं है। मैंने क्यों किया? अगर मैंने कविता का रंगमंच की हो तो क्यों किया? 75 में पहली बार मैंने करके देखा था। धूमिल की कविता मोची राम मैंने की थी और मैं एक्ट करता था उसको स्वयं, और भीष्म साहनी और तमाम लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने वो देखा है, वो प्रदर्शन, बड़ी तारीफ भी की। लेकिन वो यदा कदा वाला मामला था, कभी कभार कर लिया, फिर 78 में कभी कर लिया, फिर 82 में किया, फिर 87 में किया, 89, इस तरह से करता था बीच बीच में कभी कभी। फिर मैंने श्रृंखलाएं करना शुरू की कवियों की, एक साथ 10 कविताएं, 15 कविताएं, छोटी तो कविताएं। जैसे सर अभी आपने बताया कि एक साथ 10-15 कविताएं आप लेते थे, तो वो किसी स्पेशली रस से, हमारे नवरस होते हैं, तो उससे उस पे बेस होता था या कोई स्टोरी पे बेस होता था? आप उसको कैसे करते थे? क्या क्या उसका विचार रहता था? नहीं, उसमें कुछ कुछ बातें हम देखते थे, कुछ बातें देखते थे, जैसे मनुष्य का संघर्ष है, वो अलग हाँ। अलग तरह से व्यक्त होता है कविताओं में। मनुष्य के द्वंद्व हैं, वो अलग अलग तरह से व्यक्त होते हैं। या स्त्रियों को लेके कोई बात है ना, स्त्रियों के शोषण को लेके, या उनकी जिजीविषा को लेके, या तमाम तरह की चीजों को लेके, उन पे प्रतिबंधों को लेके, इस तरह के है, तो उस तरह की भी सीरीज होती थी। लेकिन वो बिल्कुल एक रस, एक सीरीज नहीं होती थी। कभी कभी उसमें भिन्नता के लिए बीच में दूसरी तरह की कविताएं भी आती थी, लेकिन कुल मिला के लक्ष्य एक ही होता था, पहुंचना हमको वही है। यानी सेंटर पॉइंट या केंद्रीय बिंदु वही है, उस बिंदु तक हमको पहुंचना है इन सब जरिए से। जैसे जैसे नाटक में एक ही रस नहीं होता, नाटक तो कई तरह के रसों से बना हुआ होता है। और अगर हम पुराने नाटकों को देखेंगे तो पारसी थिएटर में 2 अंक सीरियस है तो 1 अंक कॉमिक आ गया, फिर कुछ है तो फिर कुछ आ गया, लेकिन वहां एक कथा वस्तु थी, एक कथानक था। कविता में तो इस तरह की चीज मिलती नहीं ना। कविता में तो कोई कथा वस्तु थोड़ी है, कोई एक कहानी थोड़ी है, कहानी है नहीं। लेकिन कहानियां आपको एक तरह से खोज लेना, एक तरह से। कुछ कविताएं जो हैं अनाटकीय हैं, नाटक नहीं है उसमें, कोई नाटक नहीं दूर दूर तक। लेकिन आप, अगर आप थिएटर के आदमी हैं, थिएटर में रचे बसे हैं, तो आप कुछ खोजिए ना। इसलिए मैंने कहा सर्च, बहुत गंभीरता से, गहराई से। कुंवर नारायण की 1-2 पंक्तियां मैं कहता हूं। कुंवर नारायण हमारे देश के महानतम कवि रहे। पत्तों पर पानी गिरने का अर्थ पानी पर पत्ते गिरने के अर्थ से भिन्न है। पत्तों पर पानी गिरने का अर्थ पानी पर पत्ते गिरने के अर्थ से भिन्न है। तो इतनी पेचीदा बात है, इतनी गहरी बात है, इतने विचार करने योग्य बात इस तरह से आती है कविताओं में। और मैं नेरुदा की कविता तो अक्सर दोहराता हूं, मैं हर जगह में ये कहता ही हूं, पकड़ता हूं मैं शब्द को और उलट पुलट कर जांचता हूं उसको, जैसे कि शब्द शब्द ना हो, आकृति हो मनुष्य की। संभ्रमित करती है इसकी संरचना, इसके विविध आरोहों अवरोहों में, वगैरह वगैरह जो भी है। तो वो तो कहते भी हैं ये शब्द ही हैं जो गाते हैं, ऊंची उड़ान भरते हैं और जमीन पर भी उतरते हैं। मैं शब्दों को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तो यह शब्द बहुत कीमती है कविता में। इसलिए मैं कहता हूँ कि शब्द को समझना, जैसे शब्द को लेके बहुत सारे लोगों ने, कवियों ने कविताएं भी लिखी। भाषा को लेके, शब्द को लेके बहुत सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो या विद्या निवास में शो, एक तमाम तरह के भाषा संपदा और ये इसको लेके बात की है। और हम चूंकि दैनंदिन जीवन में शब्द शब्द बोलते रहते हैं, वो तो हमारा उतना ध्यान नहीं जाता कि आलाप क्या है, संलाप क्या है, कलाप क्या है, प्रलाप क्या है, विलाप क्या है। तो
तो हम उतना सोचते नहीं, लेकिन कविता में बहुत ध्यान देना पड़ता है, इसीलिए बहुत सजग सचेत होना पड़ता है। और मैं इसीलिए वो संस्कृत का श्लोक भी हर जगह कहता हूँ कि मैंने क्यों किया भाई। कविता का रंगमंच करने की जरूरत क्या, मैं 20-25 साल से कविताओं का रंगमंच बहुत ज्यादा करता हूँ, बीच बीच में कभी कभी नाटक भी करता हूँ, लेकिन ये भी एक तरह से नाटक की ही तरह प्रस्तुत होता है पूरा। तो नाट्यशास्त्र में जो श्लोक है उसको मैं कहता हूं, अनेक शिल्प जातानि नैक कर्म क्रियाणि च तान्य शेषाणि रूपाणि कर्तव्यानि प्रयोक्तृभिः। यानी नाट्य प्रयोक्ता जन को अनेक कलाओं का, शिल्पों का अपने नाटकों में निवेश करते रहना चाहिए, जो मनुष्यों द्वारा सदैव नवीन और अनंत रूपों में निर्मित की जाती है। ये नाट्यशास्त्र कह रहा है, और उन्होंने ये कहा हुआ भी है कि समय समय पे परिवर्तन होंगे तो आपको समाहित करना, ऐसा नहीं कि ये संपूर्ण हो गया, ये शास्त्र बस इसमें बंध गया। इसलिए लोक को भी उतनी ही प्रधानता दी गई है नाट्यशास्त्र में जितनी की शास्त्रीय को प्रधानता दी गई, ये दोनों को प्रमुखता दी गई। तो मैंने सोचा कि इतनी महत्वपूर्ण कविताएं लिखी जा रही हैं, विश्व में इतनी महान कविताएं रची जा रही हैं, लेकिन उनकी पहुंच बहुत कम है, क्योंकि पढ़ने वाले बहुत कम हैं। एक बार की कहानी पढ़ने वाले मिल जाएंगे, उपन्यास भी पढ़ने वाले मिल जाएं, लेकिन कविताएं पढ़ने वाले लोग बहुत कम हैं। तो ये कविताएं एक वृहद दायरे में, वृहद समूह तक कैसे पहुंचे और क्यों ना पहुंचे। भाई नाटक भी तो एक तरह का साहित्य है, और ये भी साहित्य, तो ये भी पहुंचे ना, वरना ये कैद होके रह जाएगा किताबों में। पाठक पढ़ेंगे, जितने पाठक हैं उतने पढ़ेंगे, या कुछ कुछ लोगों को देंगे तो उस तरह से फैलेगी कविता, या कभी कभी किसी किसी साहित्यिक समारोह में कभी आएंगे तो उनको सुनाएंगे उन कविताओं को। लेकिन और बड़े दायरे तक, नाटक रंगमंच के पास बहुत बड़ा दायरा भी है, आपकी अच्छी खासी ऑडियंस भी है, और आप कई कई शो करते हैं, मान लीजिए इधर उधर जाते हैं तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, तो दूर दूर तक कम से कम कविता पहुंचती है। अब जैसे कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं। अब इतनी सी कविता है कुंवर नारायण की, लेकिन कितनी पावरफुल है। लेकिन हालांकि इनको नहीं मैंने किया है, लेकिन मैं कहने के लिए कह रहा हूं कि कितना पावर छुपा हुआ है। केशव सूत कहते हैं, विश्व का विस्तार कितना है, अपनी अपनी खोपड़ी जितना। विश्व का विस्तार कितना है, अपनी अपनी खोपड़ी जितना। तो इतनी पावरफुल बात अगर या हम देखते हैं कि शेरो शायरी जी, आप देखिए कि गीत, इवन कई कई तरह के फिल्मी गीत भी, जी, उनसे कोई बहुत परहेज नहीं है, क्योंकि वो रचे बसे हैं जीवन में। तो कई तरह के गीत, कमाल के गीत, भले ही उनके अर्थ आपको ना मालूम हो। कई शब्द इस तरह के आते हैं कि उनके बेकस पे कर्म कीजिए सरकार मदीना, अगर आप नहीं भी जानते हैं लेकिन आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं। और शायर ने इतने तरह के, और तमाम लोगों ने, शैलेंद्र ने एक से एक गीत लिखे हैं। तो कितना पावर है इसमें, कविता में। तो ये पावर कविता रंगमंच में भी आए, वो कविता रंगमंच थोड़ा और प्रोन्नत हो, थोड़ा दूर तक पहुंचे, ये चेष्टा मैं करते रहता हूँ, इस तरह का यत्न करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपना लक्ष्य
या अपनी रंग परिभाषा जी हमें तय करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए और उसमें लगे रहना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि ये इस तरह का थिएटर पूरे हिंदुस्तान में बन ही जाएगा, ये नहीं बनेगा, लेकिन आप तो करें, आप यत्न तो करें, आप डिवोटेड हो के उसमें जुटे तो उसके परिणाम अच्छे ही होंगे, कोई बुरे परिणाम नहीं होंगे। एक साहित्यिक, वैचारिक, सांस्कृतिक कार्यवाही अगर आप कर रहे हैं तो ये समाज को ही तो एक तरह से बेहतर बनाने की दिशा में उठा कदम है। बिल्कुल। और जो भी है, मनुष्य समाज है, साध्य है, साधन है, चेतना है और रंजन है, ये सब काम जो है इन सब का परिष्कार भी आपको करना है थिएटर के माध्यम से। तो मेरे लिए थिएटर सिर्फ मनोरंजन का साधन कभी नहीं रहा। मैंने शुरुआती दौर से जिस तरह से थिएटर किया है, जिस तरह के नाटक किए हैं, वो कहीं ना कहीं से वो वैचारिक भी हैं और मनोरंजक भी है। मनोरंजन एक तत्व है लेकिन प्रमुखतम तत्व तो नहीं है, मैं मानता हूं ऐसा, क्योंकि थिएटर बना इसके लिए नहीं था। इसमें हम तो ये जो मैंने कहा कि ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय, अथर्ववेद से रस लेकर पांचवा वेद ये बना नाटक, ये कथा है। और अगर ये बना तो ये सभी वर्गों के लिए था, किसी एक वर्ग के लिए नहीं था। जो भी दर्शक आते हैं और यहाँ तक के कह दिया गया था कि नाटशास्त्र में ही कह दिया गया था उसी काल में कि ये तो शूद्र लोग नाटक करने वाले, लेकिन इनकी कला शूद्र नहीं होगी। तो इस तरह से है थिएटर, और क्या है, मजे मजे की चीज है, आनंद की चीज है और विचार की चीज है। विचारशील बनना चाहिए समाज को। थैंक यू सर। सर आपने अपना समय दिया, आपका आभार। अमर उजाला और अंजना वेलफेयर सोसाइटी का ये मंच आपका आभार प्रकट करता है और आशा है जल्दी आपका कोई नाटक हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत आभार, अमर उजाला का भी आभार कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और ये मौका दिया मुझे बात करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।